Every morning you have two options. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. The choice is yours. This is not just another day for you. This is yet another chance to make your dreams come true. Hello and a very good morning to one and all. This is Sajid Khod and I welcome you all to my channel Creating Tutorials with a very big heart. I am a marine engineer by profession and here to teach students of Maharashtra State Board starting from grade 8 and slowly I will go on 9th and 10th standard and later on 12th and up to 12th standard. I am very excited to be here and look forward to build a very healthy educational relationship with you all loving children. To begin with, let's start with our mathematics of grade 8, chapter 10, practice set 10.1. Come on dear children, now let us quickly begin with our 10th chapter division of polynomials. Now you must be remembering what we had already studied in our last standards, right? So if you remember, we had already studied monomial, trinomial, polynomial, correct? And now this year we will be going one step ahead of that. Okay, so let's take a quick revision of what we studied in the previous standards. If you remember, 5a plus 4a is equal to 9a. Right now, whenever we have same variables and if the operation is addition or subtraction, you can just simply go along with it. Right now, like how we do for 2 plus 2 is equal to 4 or 5 plus 4 is equal to 9. In the similar way, along with those numbers, if you have same variable, you can just do plain adding or subtraction. Okay, so 5a plus 4a is equal to 9a. Similarly, b minus 3b is equal to 5b, that is 8 minus 5 is 3 and the variable remains same. So we see that 8b is minus 3b is equal to 5b. Then as far as our multiplication operations are concerned, if you see this one, we have 7x multiplied by x square is equal to 7x cube, right? So now you see, here the coefficient of x is 7. What is the meaning of coefficient? Whichever number is there on the left side of the variable, okay, that number is called as the coefficient of that variable. For example, in this case, 7 is there on the left side of x, right? No? So 7 is the coefficient of x. Then multiplied by x square. Now with x square, there is no number we can see. That means if there is no number being given to us, it means that there is 1. So it is 1x square. So 7 ones are 7 and x multiplied by x square gives us x cube. Now there may be some students, if you have forgotten, you must be wondering how this became x cube. So let me remind you, we had studied something called laws of indices in the last year in 7th standard, right? No? And then we had studied one law that if a raised to m multiplied by a raised to n, that means if you have two numbers, okay, whose bases are same, okay, and the operation is multiplication, then their powers or the indices, they add up. Then what we have? Then we have a raised to m plus n. Alright, so this is our answer. So if you look here carefully, 7 ones are 7 and x multiplied by x square. So let us take the same example over here as far as our variables are concerned. It is x multiplied by x square. When there is only x given over here, it means that the power or the index is 1. Alright. So you see, now in this case, if you see carefully, our x is a. Alright. And this is our m and this is m. Sorry, this is n. Alright. So, as per laws of indices, we have a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. So, the answer comes out to be a raised to m plus n. That is equal to a raised to 1 plus 2 is 3, that is x cube. So, we get x cube over here. So, the answer becomes 7x cube. I hope it is clear to all of you. Then the next one is 4p square multiplied by 2p square. 4p square multiplied by 2p square is equal to 8p raised to 4. Okay, so 4 2s is 8 and p square into p square is equal to p raised to 4. The explanation goes in the same way like this one. The same law is applicable over here also.
Then the fifth one we have 3x plus 4y multiplied by 2 upon x is equal to x 6 plus 8y upon x. Now the question is how we get this answer. So you see, if you see carefully, these two are multiplying, right? No? So what we do is 3x multiplied by 2 upon x plus 4y multiplied by 2 upon x. That means whatever number of terms are present in the bracket will multiply, okay, with the term outside. So on the outside we have 2 upon x. So this 2 upon x will multiply with each and every term of the bracket. The first term is of the bracket is 3x. So once it is multiplying with 3x, second time it's multiplying with the second term of the bracket. Okay. So now if you see here, x and x cancels out. 3 2s is 6 plus 4 2s is 8. Y and x are two different variables altogether, so we cannot cancel them. So they will remain as it is. So we get 8y upon x. So answer comes out to be 6 plus 8y upon x. Right? This all we have done last year. One more thing we did last year also. 2x squared plus 3y multiplied by 4x plus 3y. Let us see, this is a very different example. So what happens is whenever we multiply two brackets, what happens is the thumb rule is how to multiply. Choose any one bracket of your choice. Okay, preferably choose first bracket. Then you take first term of the first bracket and multiply with the entire second bracket. Then if it's plus, you will take plus. If it is minus, you will take minus. Then take second term of the first bracket and multiply with the entire second bracket. Okay, so let's do it. First term is 2x squared of the first bracket, then multiplied with the entire second bracket plus, since it's plus over here, we took plus. Then we have 3y, so second term of the first bracket is 3y multiplied by second term, multiplied by the entire second bracket. So now 2x squared multiplied by 4x plus, okay, then multiplied by 2x squared plus 3y. So now what happens is this will multiply with this first. So 2x squared multiplied by 4x, then plus 2x squared multiplied by 3y. So whatever term is there outside will multiply with all the terms of the bracket. Then plus, so this is plus. Then first term is 3y multiplied by 4x, that is the first term of the second bracket. Then plus again 3y multiplied by this 3y. Okay, so that comes out to be 2 4s are 8. X square into x is x cube. You can see here the explanation how it comes. Then plus 2 3s are 6. X square into y is x square y. Then this plus, so we get plus over here. Then 3 4s are 12. Y into x is yx. You can even write as xy. Then plus 3 3s are 9. Y into y is y square. Again, the same law is applicable over here also. Okay. So these are all what we had already studied in 7th standard in algebraic expressions and all. They're better in monomial, trinomial, polynomial, correct? Na? And plus we had even studied laws of indices, of which one I had shown you here. Okay, so as and when we come across the laws of indices, I'll keep on telling you. Okay, then now we are coming to polynomials. Now in this year we will see exclusively, we will focus exclusively on division of polynomials. ठीक है, हम जो है इस चैप्टर में 8th स्टैंडर्ड में हम प्योरली जो है पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है इसमें हम डिवीजन ही देखने वाले हैं उसका. ठीक है, सो लेट मी टेल यू, आई विल बी कन्वर्सिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है. तो और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं जो वर्नाकुलर मीडियम से पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से है, कोई मराठी मीडियम से है, कोई उर्दू मीडियम से है वगैरह. तो उन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट किया है कि सर प्लीज आप जो है हिंदी में भी आप रिकॉर्ड कीजिए. तो मैं एक कॉमन वीडियो के अंदर मैं इंग्लिश में भी बोलता रहूंगा और हिंदी में भी बोलता रहूंगा, ताकि सारे मीडियम्स के बच्चे जो है उनको उसका फायदा पहुंचे. ठीक है, सो इस साल जो पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का सिर्फ डिवीजन हम देखने वाले हैं इसके अंदर. तो पहली बात तो ये है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, राइट ना. सो यू सी ऑन द बोर्ड आई हैव डन ऑलरेडी इन एडवांस फॉर यू द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल.
कि if the index of each term of an algebraic expression in one variable is a whole number, then the expression is called a polynomial. इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बोल रहा है हमसे। ये कह रहा है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? जैसे अगर मैं मान लो, अगर मैं लिखूं a raised to m, मैंने अगर लिखा तो ये a जो है, ये a मेरा होता है बेस। ओके, ये नीचे वाला नंबर जो होता है इसको हम कहते हैं बेस, और ये ऊपर वाला जो होता है इसको हम कहते हैं इंडेक्स, या फिर इसको एक और नाम है पावर। कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं, इंडेक्स या पावर कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इफ द इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे सामने a raised to m, इसका इंडेक्स जो है, ठीक है, इन वन वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो ये वन वेरिएबल के अंदर खाली एक है और वो होल नंबर है। तो ये m जो है, ये m जो है हमारा क्या होना चाहिए? ये m हमारा होना चाहिए होल नंबर। इट शुड बी अ होल नंबर। होल नंबर कौन कौन से होते हैं? स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनफाइनाइट है। ठीक है, स्टार्ट होते हैं 0 से। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनफाइनाइट है। ठीक है ना, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक फर्क है, दैट नेचुरल नंबर हमारा 0 नहीं होता, होल नंबर में हमारा 0 होता है। ठीक है, तो ये जो आगे हमारा होल नंबर होगा, देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। यहां मैंने आपको एग्जांपल जो बताया, मैंने आपको समझाने के लिए बेस और इंडेक्स खाली एक ही मैंने एक्सप्रेशन लिया है। तो बेसिकली एक मोनोमियल हो गया। आपके पास दो से ज्यादा टर्म्स होंगे, तीन से ज्यादा टर्म्स आपके पास होंगे, तो वो आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल। मैंने एग्जांपल अभी लिखा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल इज m cube minus 3m square plus 7m plus 9 is a polynomial. How? You see now, एक अगर सिर्फ m क्यूब अगर होता तो वो हम कहते हैं ये मोनोमियल है, राइट ना। अगर सिर्फ ये दो होते या कोई भी दो अगर होते तो हम ये कहते हैं कि वो बाइनोमियल है। अगर कोई भी तीन अगर होते तो हम ये कहते हैं कि ट्राइनोमियल है। लेकिन ये तीन से ज्यादा टर्म्स हो गए, तो जब टर्म्स तीन से ज्यादा हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो एक पॉलिनोमियल है। ओके, सो 1, 2, 3, 4 ये एक पॉलिनोमियल हो गया, बिकॉज टर्म ज्यादा है, पहली बात तो। और दूसरी बात क्या है, जो डेफिनेशन हम कहता है उसके हिसाब से देखेंगे कि इफ द इंडेक्स ऑफ ईच टर्म है ना, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, अगर इन वन वेरिएबल इज अ होल नंबर, तो देखो एक ही वेरिएबल है, हर जगह पर m ही है हर जगह पर। ठीक है, इधर आप बोलेंगे यहां पर m नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो क्या है, हर एक वेरिएबल में है, और सबका जो पावर जो है या इंडेक्स जो है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा है। पावर्स एंड इंडेक्सेस ऑफ द वेरिएबल आर 3, 2, 1 एंड 0। अब ये 0 कहां से आ गया? ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 9, ये 9 का मतलब होता है 9m raised to 0। लॉज ऑफ इंडेक्सेस जब नहीं, मैंने आपको ये बताया था, वहां हमने एक और लॉ पढ़ा था, आपको याद होगा शायद। ओके, a raised to 0 is equal to 1। मतलब क्या है, कोई भी आप नंबर लोगे और उसको रेज टू 0 कर दोगे, उसका इंडेक्स से पावर 0 अगर होगा तो उसके वैल्यू 1 बन जाती है। जैसे कि अगर आपने 100 लिया, 100 रेज टू 0, तो आंसर आ जाएगा 1। आपने दिया 1 करोड़ रेज टू 0, आंसर हो गया 1। ठीक है, तो वो लॉ ऑफ इंडाइसेस एक और मैंने बताया आपको, सेकंड वाला। उसके हिसाब से जब ये 9 है तो 9 के बाजू में कुछ नहीं है, तो 9 के जो कुछ नहीं है मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि m, राइट ना, तो ये m के पास ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है। ओके, और इसके पास कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो क्या हो जाएगा, m रेज टू 0 इसके हिसाब से 1 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे पावर्स होते हैं 3, 2, 1, 0, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। वो 0 कैसा आएगा, आई शोड यू हियर। सेकंड एग्जांपल इज z² minus 1 upon z plus 6 is not a polynomial। अब ये सेकंड एग्जांपल जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। बिकॉज ये जो सेकंड टर्म जो हमें दिख रहा है 1 अपॉन z, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये z को मैं ऊपर ले लूं, है ना, ये 1 अपॉन z मतलब इट्स अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। सो व्हेनेवर यू हैव न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर,
और उसको आप उस डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में ऊपर लेके जाते हो, ठीक है, तो उसकी पावर जो भी होती है वो पॉजिटिव पावर उसकी नेगेटिव बन जाती है। जो हमने 7th में पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा है हम लोगों ने, राइट ना, वो यहां पर अप्लाई हो जाता है। तो ये z की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पर z रेज टू 1 है, तो ये z रेज टू 1 है, ये नीचे की तरफ रहेगी। अब ये जब ऊपर चला जाएगा, ये 1 निकल जाएगा तो ऊपर आ गया z, तो इसका पावर जो 1 है +1 वो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा है पावर और इंडेक्स ऑफ 1/z इज -1, और माइनस के नंबर्स जो भी होते हैं हम उनको नेगेटिव नंबर्स कहते हैं, और नेगेटिव नंबर्स कभी भी होल नंबर नहीं होते, बिकॉज इसी वीडियो में हमने शुरू में देखा था जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे यहाँ पे होल नंबर का, कि होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, ये स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दे आर ऑल होल नंबर्स, राइट ना। और अगर आपको याद अगर होगा तो हमने नंबर लाइन में भी पढ़ा है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, कि नंबर लाइन में अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो ये अगर हमारा नंबर लाइन अगर है तो सेंटर में हमारा 0 होता है, फिर 1 2 3 होता है on the right side of the 0, and on the left side of the 0 we have -1 -2 -3 and so on, correct ना। so होल नंबर के हिसाब से स्टार्ट होता है 0 से, होल नंबर 0 से पूरा यहां की तरफ होता है, और हमारा ये आया -1, और माइनस हमारा 0 के लेफ्ट साइड में, दैट इज द रीजन व्हाई -1 इज अ नेगेटिव नंबर एंड नॉट अ होल नंबर। तो जो हमारा डेफिनेशन है वो यहां पर होल्ड नहीं करता, दैट इज द रीजन व्हाई एग्जांपल नंबर 2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, एक में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल एंड हाउ इट इज अ पॉलिनोमियल, व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल, करेक्ट ना, वो मैंने सब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड एग्जांपल मैंने आपको ये बताया है कि व्हाई दिस एग्जांपल इज नॉट अ पॉलिनोमियल, उसको भी मैंने आपको यहाँ बता दिया सब लिख करके, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, यहाँ एक्सप्लेन किया, वहां एक्सप्लेन किया। सो दिस इज बेसिकली इन नटशेल कि पॉलिनोमियल क्या है, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था उसके बारे में भी आ गया, और प्लस इस साल जो है हम पढ़ने वाले एक्चुअली पॉलिनोमियल्स डिवीजन हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए छोटा सा एक नटशेल के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल बेसिकली। ओके, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद प्रैक्टिस सेट 10.1। Now, as far as the practice set 10.1 is concerned, okay, this set is divided into 2 parts. In the first part, we have to divide a monomial by a monomial. मतलब एक ही टर्म होगा और उससे हम एक ही टर्म वाला डिवाइड करेंगे, और दूसरे पार्ट में आएगा तो डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। ओके, तो एक पॉलिनोमियल होगा जहां पर इस टाइप का कुछ होगा हमारे पास, और हम डिवाइड करेंगे बाय मोनोमियल, इस टाइप का कुछ होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में हमारा 10.1 पूरा हो जाएगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 10.1। Thank you for watching my videos, dear friends. I am making all possible efforts to bring all educational videos to you so that you all fall in love with your studies. Please watch full videos and give me your useful suggestions. I will be waiting for that. And I must say, every subscription encourages me to keep moving ahead. So, if you find my videos worth watching, please do like, share and subscribe my channel, Creative Tutorials. And yes, before you leave, don't forget to hit the bell icon just next to the subscription button. Thank you so much. See you soon in my upcoming videos. Thank you.